Hello and welcome to our new ABC's episode where we cover PC configs for different use cases. आज का use case है FL Studio जो कि beginner से लेके advanced level तक audio processing use case के लिए. In fact, not just FL Studio, this video will be talking about audio processing in general. Please stay tuned. So when it comes to audio processing, आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है while deciding for a PC config. कि आप किस टाइप का काम करना चाहते हो. In the sense that आप क्या बहुत ज़्यादा लाइव इंस्ट्रूमेंट्स या एक्सटर्नल डिवाइसेस से इनपुट ले रहे हो या आप कंप्यूटर जनरेटेड साउंड यूज़ कर रहे हो. बेस्ड ऑन दिस योर हार्डवेयर अप्रोच विल चेंज. सेकेंडली कि आप कहाँ काम कर रहे हो. अगर आप एक स्टूडियो एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो देन यू हैव टू बी माइंडफुल कि आप जो भी पीसी कॉन्फ़िगरेशन या जो भी कंपोनेंट सेलेक्ट कर रहे हो दैट एक्चुअली जनरेट्स द लोएस्ट साउंड पॉसिबल. सो आई थिंक dB by dB, decibel by decibel, these sounds add up. So many of the times when we consult with audio processing clients, we have to sacrifice aesthetics for sound performance or getting lower sound out of your computer overall. तो ये दो तीन चीज़ों का ध्यान रखते हुए लेट्स बिगिन टूवर्ड्स द कॉन्फ़िग, राइट. अज्यूमिंग फॉर नाउ कि आप जो है एक्सटर्नल इनपुट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हो. लेट्स स्टार्ट विद द मदरबोर्ड. अगर आप मदरबोर्ड्स की तरफ देख रहे हो, इफ यू यूजिंग अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस या आप लाइव इंस्ट्रूमेंट से इनपुट लेना चाहते हो, यू विल हैव टू लुक एट motherboards that already have native inputs to use or motherboards that will support expandability. So you're actually looking at probably the Aorus high tier series wale motherboards, you're looking at the Asus Strix motherboards, you're looking at the MSI Gaming Pro series and above, जिसके अंदर already बहुत ज़्यादा native inputs exist करते हैं और expandability भी काफ़ी ज़्यादा है. In fact, there's another reason why we suggest for you to go to higher tier motherboards is because इसके अंदर VRMs होते हैं ज़्यादा. And because of that, it helps your CPU remain stable and perform at lower temperatures. Lower temperatures means आपके जो coolers हैं उनको ज़्यादा flex नहीं करना पड़ता है. If your coolers are not flexing, they're not making noise. So you're killing that entire noise argument also on the motherboard side. If you go for a higher tier motherboard, it usually will mean that your cooler is making lesser noise in the overall build. So when it comes to the processor side, think of FL Studio as the audio equivalent of a visual content workflow, right? So clock speed will typically impact your render times. आपकी crackling कम होगी output के अंदर. Your FX handling will be smoother. If you're working with multiple instruments या आप synthesization के ऊपर काम कर रहे हो, Romplers के ऊपर काम कर रहे हो, Serum, Arturia, इस टाइप के अगर plugins आप लोग यूज़ कर रहे हो, then having more cores will work better because the more plugins you add, the more cores they start using. The more instruments you add, the more core usage increases. Therefore, look at cores when you're actually doing those kind of operations. And typical आपके workflow के लिए, of course, clock speed, as I just mentioned. जहाँ तक हमारी पिक का सवाल है, आई थिंक द इंटेल एक्स सीरीज वुड डू रियली वेल फॉर मिड टियर एप्लीकेशंस. स्पेशली कुछ ऑडियो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऐसे हैं विच आर बायस्ड टुवर्ड्स इंटेल, सो प्लीज हैव अ लुक एट दैट बिफोर चूजिंग योर प्रोसेसर. अदरवाइज आई थिंक द 5th gen Ryzen series will work equally well for most audio processing applications and especially for FL Studio because AMD is optimized for FL Studio as well. Now, when it comes to RAM, I think with any content workflow, हम लोग इसके बारे में बार-बार बात करते हैं. It depends on how smooth you want your performance. And I think typically 16 के साथ आप start कर सकते हो. मगर अगर आपको smooth transitions चाहिए, अगर आपको if you want to just pull in instruments on the go, if you want to make manipulations on the go, I think you'll do well with having 32 GB for a very smooth workflow. अगर आप ऑडियो प्रोसेसिंग में इंटरेस्टेड हैं या ऑडियो प्रोसेसिंग में प्रोफेशनली काम करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन. पिछले GPU शॉर्टेज ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है. सो ऑडियो प्रोसेसिंग इज वन इंडस्ट्री विच हैज गिवन अ बिग FU टू द माइनर्स, टू एवरीबडी इज बीन होर्डिंग ग्राफिक कार्ड्स जो महंगा बेच रहे हैं, जो रो रहे हैं. यू गाइज आर लाफिंग हैप्पीली टू द बैंक. आप लोगों के यूज केस के अंदर ग्राफिक कार्ड का नो यूज. आपके यूज केस में एक्चुअली सिंपल बेसिक GT710 या ऑनबोर्ड ग्राफिक्स डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम करेंगी अनलेस you are working on an application which actually marries, अगर आपको ऐसे plugins है जिसके अंदर आप visuals को match कर रहे हो audio के साथ, then that's a different story. But otherwise, a typical GT710 or onboard graphics would do very well.
कंटेंट वर्कफ्लोज के स्टोरेज स्ट्रैटेजी के बारे में हम बार बार बात करते हैं. हमारे पिछले 2 वीडियोस में भी हमने बात किया है, वेयर वी रिकमेंड अ 3-tiered अप्रोच. Look at our previous videos to understand how to use the NVMe SSD, the SATA SSD and the hard drive to arrive at your optimal storage configuration. After having spoken about performance, let's move our attention to components that matter but don't matter, but kind of matter. What the fuck? अगर आप स्टूडियो एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, देन योर फर्स्ट लुकआउट अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंस साइड ऑफ इट वुड बी टू मिनिमाइज द साउंड दैट योर मशीन मेक्स. तो इसके लिए कई बार केस का सिलेक्शन मैटर कर जाता है. बहुत सारे ऑडियो प्रोडक्शन के क्लाइंट्स हमारे दे काइंड ऑफ रिक्वेस्ट फॉर साइलेंट केसेस. तो Antec P101 साइलेंट हो गया, या MSI का 100M क्रिएटर हो गया. These kind of cases are well suited for a studio environment क्योंकि वो they reduce the amount of sound or they reduce the kind of sound that the PC creates. उसके अलावा जहाँ तक कूलर की बात आती है, typically there are really great silent air coolers from Be Quiet. या आपका Noctua हो गया, they've got their silent coolers that perform really well. जहाँ तक cooling की बात आती है, I think an often overlooked solution is custom liquid loops. Because custom liquid loops work very silently. They've got a passive cooling effect that can really pull down the sound profile of your build. So that is also something, if budget is not a constraint, then going for that kind of solution can also help in reducing the sound from the environment. Finally, when it comes to PSU, typically साइलेंट PSUs are kind of a misnomer क्योंकि उसका फ़ैन तो चलता ही रहता है. बट there are I think if you go for the Corsair RM series, I think you wouldn't be too far when it comes to a PSU that makes less sound. Alright, so that's it for this episode of the ABC series. हमने आज बात की ऑडियो प्रोडक्शन के बारे में. हमको बताइए आपको अच्छा लगा नहीं लगा. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन इन ऑडियो प्रोसेसिंग और ऑडियो प्रोडक्शन, प्लीज़ रीच आउट टू अस ऑन आवर सोशल्स, ऑन आवर ईमेल. सपोर्ट पर ईमेल डाल दीजिए, फीडबैक ही दे दीजिए कि वीडियो कैसा लगा, व्हाट इज़ द स्टफ दैट यू वांट अस टू कवर नेक्स्ट. हम लोग यूट्यूब कमेंट्स देख रहे हैं. आई नो पीपल वांट अस टू डू ब्लेंडर, आई नो पीपल वांट अस टू डू स्टफ लाइक दैट, आई नो यू वांट अस टू डू सिनेमा 4D, बट बिकॉज वी हैव डन अ कपल ऑफ कंटेंट क्रिएशन वीडियोज ऑलरेडी, हम लोग ने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट लेग लेते हैं इस बार. वील कम बैक टू दोज वर्क फ्लोज एज वेल. वी प्रॉमिस वील ट्राई टू कवर एज मेनी एप्लीकेशंस एज पॉसिबल with this series, right? Please keep the feedback rolling in. Like, share and subscribe. Thank you for watching. So stay tuned. प्रोसेसर में क्या बोलना है अपने को? If this ends up in the fucking bloopers, right? कि मैं पूछ रहा हूँ मतलब क्या बोलना है, उसके बाद बोल रहा हूँ मैं तो. The illusion of me knowing shit will fucking go away, bastard.